Okay, so today we start with the most important chapter, that is called as the exception and error. So when you are writing a program, you found there is some kind of error is arises in your program. Okay, like sometimes it is showing you that your keywords are misspelled, punctuation is omitted. Punctuation means when you write a program, every statement is ended with semicolon. So if you are not given semicolon, then at that timing it is also showing you error. So when error is arises in your program, then it is stop the normal flow of your application. It is not allowing you to do the further work. So that is called as what? Like error. So when error is arises, it is not allowed to go further operation in your program. So this error is of three types. One is syntax error, logical error, another is your runtime error. Okay, तो जब आपका एरर आता है, आपका प्रोग्राम क्या होता है ना, ठीक से बिहेव नहीं करता है, एंड इट इज नॉट शोइंग यू द एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट यू वांट टू गेट, सो दैट यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, जैसे कि आपका गाड़ी खराब हो जाता है, तो यू हैव टू व्हाट रिपेयर इट. फैन और कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब हो जाता है, देन आप इसको रिपेयर करते हो. दैट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट परफॉर्मिंग द एक्चुअल वर्क. द सिमिलर वे द एरर इज जस्ट लाइक दैट. इट इज stop the normal execution of your program. It is of three types. One is your syntax error, logical error, another is runtime error. So let me, I will show you here. Like three error we have: syntax, logical, and runtime error. Syntax error means normally when you are not write the semicolon and in place of capital system. So when you write a system, so we write capital S. So in place of capital S, if you write small s, then that your keyword are mistake. So that all belongs to your syntax error. Next error is what? Your logical error. So what is that logical error? In the case of logical error, your syntax is correct. Syntax is correct means program is execute successfully. आपका program execute होगा. So program is compiled and executed successfully, but it doesn't give desired output. तो आपका लॉजिकल एरर क्या है? आपका प्रोग्राम करेक्ट है, सिंटैक्टिकल इट इज करेक्ट, इट इज कंपाइल्ड एंड रन. आपका कंपाइल्ड भी होगा और रन भी होगा, बट आप जो रिजल्ट देखना चाहते हो, जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट इज नॉट गिविंग दैट रिजल्ट. सो दैट इज कॉल्ड एज योर लॉजिकल एरर. Ankita, are you saying asking something?
No, sir. So I will show the example of this logical error. Okay, so what is actually logical error means? Suppose you are writing a program to find out which number is greater. You are writing a program to find out which number is greater. So I am writing here if condition. If A greater than B. If A greater than B, suppose it is showing you system.out.println first number is greater. First number is larger. So I give that syntax. Okay, if your A greater than B, it is showing you your first number is greater. Now what happened here? If you pass A is equals to 10 and A is equals to 20, B is equals to 10, then it is showing you your first number is greater. मतलब A का वैल्यू 20 दोगे, B का वैल्यू 10 दोगे, तभी आपको दिखाएगा क्या? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. सपोज मैं यहां पर दो इक्वल वैल्यू लूंगा, A का वैल्यू भी 10 लूंगा एंड B का वैल्यू भी 10 लूंगा. So here I pass the two equal value. A value is 10 and B value is 10. But for checking the equality, I am not giving any kind of condition. I'm giving only one condition. If A greater than B, then it is showing you the first number is greater, and if in the case of passing a value, if I pass A is equals to 10 and B is equals to 10, so for this I am not giving any kind of condition. So in that scenario it is chosen, it is not showing you any output. मतलब आपका प्रोग्राम करेक्ट है, आपका आउटपुट नहीं दिखाया. मीन्स your program is compiled successfully, executed successfully, but it is not giving the desired output. So that is your logical error. A runtime error is what? So another type of error I go for it, that is called as a runtime error. In a runtime error, your program is compiled successfully. आपका program compiled होगा, but at the time of execution it shows an error. Means syntactically आपका program correct है, आप पूरा correct syntax लिखे हो. Suppose at the time of execution, जब आपका okay, so just a minute. What is the logical error? Your logical error I have told. So now I have to go for a runtime error. Runtime error. In runtime error, your program is compiled successfully, but at the time of execution it shows an error. It means what? If you want to open a file, your file is not present. आप एक फाइल इनपुट आउटपुट चैप्टर में आप एक फाइल को ओपन करना चाहते हो, बट आपका फाइल ही प्रेजेंट नहीं है. सो दैट यू कैन से इट इज कॉल्ड एज द रन टाइम एरर. बीच बीच में क्या होता है ना, आप कोई भी यूपीआई आपके थ्रू में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका मनी डिडक्ट हो जाता है अकाउंट से, लेकिन जो डेस्टिनेशन जो आदमी है उसके पास नहीं पहुंचता है.
और एट द टाइम ऑफ सेंडिंग मनी आपका इंटरनेट का बैलेंस खत्म हो जाता है और somebody is अदर पर्सन इज कॉलिंग यू ऑन दैट नंबर, तो आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो तभी क्या होता है, आपका जो ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो you can say it is called as a runtime error. You are not expecting that kind of error is happen with you. Okay, so that is called as the what, runtime exception. When you are move through a scooty or bike, your bike get punctured, so you can say it is also called as a runtime error. Okay, bike puncture is a runtime error. So now your all runtime error, so all exception is belongs to the runtime error. Exception is what? Now exception is a runtime error which is happen at runtime. Exception का मतलब क्या है ना, you are not expecting that kind of error is happen with you. वो error आपके साथ हो सकता है और situation आपके साथ आ सकता है, so that you are not aware of that and it is happen with you. So that is called as your runtime error. On all exception belongs to this runtime error. Then there is a question that can we handle this runtime error? गाड़ी पंक्चर हो जाता है, हम हैंडल करते हैं, गैरेज को जाते हैं। तो सिमिलर वे आप जब प्रोग्राम करते हो और रन टाइम एरर को आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं, यू कैन हैंडल इट। लाइक नाउ द विंटर सीजन इज गोइंग ऑन, you having the sweater, you having the jacket with you when you are traveling in outside. When it is a rainy season, you have a raincoat, you have the umbrella with you. So in the rainy season you are not knowing when it will be rain. Depending upon the weather, if it is cloudy then you are expecting that maybe there is a chance of rain. मतलब वेदर को देखकर हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं हाँ आज बारिश हो सकता है, और बाय वेदर फोरकास्टिंग न्यूज आल्सो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, so that you have the precaution for it, you have the umbrella, you have the raincoat with you. So when you have raincoat and umbrella with you, that doesn't mean you stop the rain. आप बारिश को रोक नहीं सकते हो, बट यू हैंडल दैट सिचुएशन, आप वो सिचुएशन से आराम से जा सकते हो और कुछ प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। ओके, एक्सेप्शन हैंडलर वर्क इज लाइक दैट, वी आर वेयरिंग द हेलमेट as like what, maybe we are facing an accident, so that we keep the helmet with us. That doesn't mean every day we are facing the accident. Maybe there is a chance of accident, so that we are wearing the helmet. Similar way, when you are writing a program, there may be a chance of exception, there may be a chance of runtime error. To handle that situation, automatically we have the exception handler. Okay, so we have the exception handler here. So now I write this thing, what is that syntax error, logical error. So syntax error when keywords are
misspell and punctuation is punctuation is omitted. When keywords are misspelled and punctuation is omitted, is called as a syntax error. Excuse me. Next is logical error. Program is compiled successfully program is compiled and executed successfully, but doesn't give the desired output. So here in the runtime error, program is compiled successfully, but at the time of execution, it shows an error. Like open a file, want to open a file, but file is not present. Divide the number with 0. That is called as the runtime error. Syntax error, logical error, another is runtime error. Now check here. The errors are what that is handled to create a reliable program. So you can handle the error. When the error is appears, it results the application box. Box means you can say it is a some kind of error that is happen in your program. So when it is appear, then it is beyond your control of application. मतलब आपका application खुद वो एरर को हैंडल नहीं कर सकता है, तो वी हैव टू सॉल्व इट. आप खुद को इसको सॉल्व करना पड़ता है. और जो सेमीकोलन जो है उसको नहीं है, कीवर्ड्स कहीं पर गलत है, उसको आप ठीक करना पड़ता है. Exception is what? That is an error that occurs at runtime. It produces the abnormal behavior that leads to unpredictable result. जो रन टाइम एरर आता है, बीच में आपका लैपटॉप काम नहीं करता है, स्टॉक हो जाता है, तो आप क्या करते हो ना, फुल्ली जाकर उसको शट डाउन करते हैं. फाइल ओपन नहीं होता है, आप एक फोल्डर ओपन कर रहे हो, फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है,
it will take the timing. That means what? It perform the abnormal behavior. तो आप बोलते हो हाँ मेरा सिस्टम स्लो हो गया है या कोई वायरस अटैक किया है, तो आई हैव टू फॉर्मेट इट. So when that kind of situation is happen, it disrupts the normal flow of your application. All exception and error that is present in Java, it comes from the throwable class. Throwable is the base class for handling all error and exception. In exception, it contains the runtime exception, SQL exception, IO exception, arithmetic exception, file not found exception. These are called as the belongs to the exception. This exception is again in two categories. One is unchecked exception, another is your checked exception. Then what is that unchecked exception? मतलब यहां पर आप सपोज हॉस्टल में रहते हो, देन बारिश का मौसम है, तो यू हैव टू इंश्योर बाय योरसेल्फ, आप खुद इंश्योर करोगे आप हेलमेट लिए हो कि नहीं, रेनकोट लिए हो कि नहीं, अम्ब्रेला लिए हो कि नहीं, दैट यू हैव टू चेक. ओके, यू हैव टू चेक और यू हैव टू, आप उसको छोड़कर भी जा सकते हो. तो आपको वहां पर बोलने के लिए कोई नहीं है. मतलब जब क्या होता है ना, बीच बीच में आप ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, तो सुबह सुबह हम ऐसे ही रॉन्ग रूट में भी चले जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो पर्सन इज जजिंग फॉर यू. चेक्ड एक्सेप्शन इज व्हाट, आई एम गोइंग इन द सेम ट्रैफिक, मैं वही ट्रैफिक में जा रहा हूं, लेकिन वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा, लाइट भी है, सब चीज है, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा, वो बोलेगा, एंड अगर आपका कोई रूल तोड़ते हो देन is also judging you. Checked exception, you can say, like you are staying at home and you are going to your college and tuition, your mother is ensuring that you have to take the raincoat and umbrella with you if it is a rainy season, and helmet. So it is a two category of exception is present. Unchecked exception, the compiler is not having any kind of boundary that you have to handle it or you have to check it. Checked exception में क्या होता है ना, compiler having that rights, वो compulsorily उसको check करे. So I will show that what is it actual means. See that what is actually checked exception. Checked exception are the subclass of exception class. It is the subclass of exception class excluding error, and its child class runtime exception and its child class. तो checked exception क्या है, ए सब क्लास है किसका ना, एक है इट इज ए सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास एक्सक्लूडिंग
error and its child class, runtime exception and its child class. As the name suggests, checked exception are checked by the compiler. The compiler will check for that exception. Compiler इसको चेक करेगा. जैसे कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस चेक करेगा, घर में आपका मदर चेक करते हैं that you are taking an umbrella or not. If a programmer generate a check exception, एक प्रोग्रामर अगर चेक एक्सेप्शन जनरेट करता है within a method with the help of throw keyword, तो थ्रो कीवर्ड के मदद से हम मेथड में एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं. देन द प्रोग्रामर इज बाउंड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन विद इन दैट ब्लॉक. अगर मेथड में आप एक्सेप्शन डिफाइन किए हो, उसी मेथड में आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा. अदरवाइज द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड एट द कंपाइल टाइम. अगर आप इसको हैंडल नहीं करते हो तो प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. इफ द प्रोग्रामर जनरेटेड चेक्ड एक्सेप्शन नॉट हैंडल इट विद इन दैट ब्लॉक, अगर उस ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में वो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, अगर उसी ब्लॉक में उसको हैंडल नहीं कर रहा है, देन द प्रोग्रामर पास द एक्सेप्शन टू द कॉलर ऑफ द मेथड बाय यूजिंग ऑफ थ्रो कीवर्ड. ओके, तो यहां पर क्या होगा, आप मेथड में आप ऑन चेक्ड एक्सेप्शन डिफाइन करोगे, तो मेथड कहां पर कॉल होता है, यूजर डिफाइंड मेथड कहां पर कॉल होता है. आप जो मेथड बना रहे हो वो कहां पर कॉल होगा, एनीबॉडी, अंकिता, अभिषेक, where the function is called, which one is the place where you are calling a function. Hello, Abhishek. Yes, sir. Tell me, where you have called a method, इन मेन मेथड. आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड कॉल कर रहे हो, क्या सोच रहे हो क्या. तो व्हेन यू आर जनरेटिंग ए चेक्ड एक्सेप्शन, जब आप चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करते हो, चेक्ड एक्सेप्शन कहां पर जनरेट होगा, मेथड में. अगर वो एक्सेप्शन आप उस मेथड में हैंडल नहीं करते हो तो वो कहां पर हैंडल होगा, ना मेन मेथड में हैंडल होगा. So if the programmer generate a checked exception and not handle within that block, then the exception within that block, the exception is generated. Then the programmer has the exception to the caller of the method by using of throw keyword. तो throws keyword के मदद से जहां पर आपका फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर वो चला जाएगा. Then unchecked exception में क्या होता है, it is a error and its child class, and runtime exception in its child class. Error and its child class, runtime exception in child class are treated as unchecked exception. As the name suggests, unchecked exception is not checked by the compiler. Compiler unchecked exception को चेक नहीं करता है. When the programmer generate an unchecked exception, अगर कोई प्रोग्रामर unchecked exception को जनरेट करता है within a block, in the programmer is bound to handle the exception. तो उसी ब्लॉक के अंदर वो एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा. If the programmer doesn't handle the exception within that block, the compiler doesn't force the programmer either to catch the exception or to declare the throws keyword in clause. चेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है, आपका मोबाइल खराब हो गया, आप
चले गए हो कहाँ पर ना, सर्विस सेंटर में जाकर आप चेक करोगे, वहां पर वो वैलिडेट होगा, आपको मांगेगा सीरियल नंबर क्या है बोलो, कुछ रिसिप्ट है कि नहीं बोलो, अगर नहीं है दैट इज व्हाट चेक्ड एक्सेप्शन, वो वेरीफाई किया। अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है, so that when the programmer generate an exception within a block of programming is bound to handle that exception. If the programmer doesn't handle the exception within that block, the programmer doesn't force the program. Okay, तो यहाँ पर प्रोग्रामर को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप इसको डिफाइन करो। Checked and unchecked. Is it clear up to this? Yes, sir. So what are the types in the unchecked exception? One is java.lang.runtime exception, java.lang.error. These are all belongs to the unchecked exception. So this exception is handled through the try and catch block. Unchecked exception is handled or it is discovered by the try and catch block. Unchecked exception are what? The exception except the runtime exception, and it is handled with the try and throws clause. Unchecked exception is handled with the try and catch. Checked exception is handled with the try with throws clause. Then what is that try and catch? Try and catch basically it is used to guard your program. Like we are wearing the raincoat, that doesn't mean every day the rain is happening. We wearing the helmet, that doesn't mean accident must be happening. So try and catch block is just guard all of your coding. If when any such type of incident will happen in any time, so it will catch it, it is handle it. So after handling it, it pass the control to the catch block. The catch block contain the exception handler. Try block is guard your program. Catch block is handle the exception. Suppose if you want to divide a number by 0, it shows that you are attempting to divide a number with 0. So next is what? If you want to insert a record in any database, so your database is not present. So for that, some kind of handler is present, which is represented in the catch block. So basically, the try block is used to handle the exception. Try block is used to guard your exception. Catch block is used to handle the exception. Okay, it's just like what? Correlated to each other. Try and catch. Suppose you are writing a code up to 100 lines. That means
you cannot put all the 100 line into the try block. You have to put that program into the try block where there is a chance of exception. तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, लाइक हम जब ट्रैफिक में जाते हैं तो नॉर्मली वे नॉट यूजिंग द हेलमेट. हेलमेट हमारा पास होता है लेकिन हम वेयर नहीं करते हैं, गाड़ी में रखते हैं. जब किसी कुछ भी स्क्वायर के पास हम गुजरते हैं हम हेलमेट लगा देते हैं. तो वी नो दैट in that particular square or in that particular place we may face that situation where helmet will be checked and you are to be fined, so that वो स्क्वायर आने से हम वो हेलमेट डाल देते हैं. तो सिमिलर वे ट्राई ब्लॉक आप पूरा कोडिंग में आपका यूज नहीं होता है. ओके तो आपका सपोज 100 लाइन्स ऑफ कोड है, उसमें से सपोज बीच में कुछ 20 लाइन में आपका कोड में एरर आ सकता है. तो यू पुट दैट 20 लाइन इनटू द ट्राई ब्लॉक. तो जो 20 लाइन में आपका एरर आएगा वही 20 लाइन को आपको ट्राई ब्लॉक में डालना है. देन यू हैव टू यूज द कैच ब्लॉक. The catch block is used to provide a solution. It is used to retry the operation. It is giving you the alternative operation. It is used to gracefully exit or return. Okay, it is not like abnormally आपका application close हो जाएगा. Suppose आपका system में कुछ problem हुआ, that doesn't mean it is automatically shut down. वो आपको चांस देगा दैट यू हैव टू सेव योर फाइल. आप पहले आपका फाइल को सेव करो, उसके बाद आप रिटर्न और चले जाओगे. इन कैच ब्लॉक इट मस्ट नॉट बी एम्प्टी. इट गेट द रेफरेंस ऑफ java.lang.exception object. The try block is just like protecting your codes. So that doesn't mean you have to put all the lines in the try and catch block. You have to only use this try and catch block where in which line there is a chance of exception. So I will show you. So I define here class XYZ. Then suppose there is a code is present 1 to 150. आपका 1 से लेकर 150 तक आपका लाइन से. सपोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर लाइन में आपका एरर आ सकता है. तो जिस लाइन में आपका एरर आ सकता है तो यू हैव टू पुट दैट लाइन इनटू द ट्राई ब्लॉक. सो यू डिफाइन ट्राई, then here you define 10, 11 and 12. Then you define here catch block. यहाँ पर कैच ब्लॉक डिफाइन करो. तो सिर्फ मैंने 100 लाइन को ट्राई एंड कैच ब्लॉक में मैंने डिफाइन नहीं किया. मेरा जो 10, 11, 12 लाइन में एरर आ सकता है तो आई पुट दैट लाइन इनटू द ट्राई ब्लॉक. मैं वही सेंटेंस को ट्राई ब्लॉक में डाल दिया. सपोज यहां पर मैं कुछ एरिथमेटिक एक्सेप्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. सपोज यहां पर कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन में कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा. तो आई डिफाइन हियर एरिथमेटिक एक्सेप्शन पूरा डिफाइन करना है. उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है. ई इज द ऑब्जेक्ट विच इज हैंडल द एक्सेप्शन. ओके सो एरिथमेटिक एक्सेप्शन. So which exception is arises, you have to give that name, then you have to define the object. So when you define the object, this object is handle your exception. This object is handling what kind of thing is happened, then it is do that. Next question is what? Suppose 10, 11, 12 में
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैंने एरिथमेटिक एक्सेप्शन डाला, और दूसरा एक्सेप्शन नहीं आ सकता है क्या? तो अगर और दूसरा एक्सेप्शन आएगा तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? तो यू हैव टू डिफाइन मल्टीपल कैच ब्लॉक। अगर आपका मल्टीपल एक्सेप्शन आ रहा है, ओके, इन ए सिंगल ट्राई ब्लॉक यू कैन डिफाइन मल्टीपल कैच ब्लॉक। सिंगल ट्राई ब्लॉक में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मल्टीपल एक्सेप्शन आ सकता है, तो यू कैन डिफाइन हियर मल्टीपल कैच ब्लॉक। आप मल्टीपल कैच ब्लॉक यहां पर डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो बीच बीच में क्या होता है, जब सर्दी का मौसम होता है बीच बीच में एक दिन बारिश हो जाता है। ओके, सो कंफ्यूज, सो स्वेटर पहनोगे या रेनकोट पहनोगे? सो यू हैव टू टेक द बोथ, दोनों लेना पड़ेगा, दोनों कैच ब्लॉक। यू हैव टू टेक द स्वेटर, यू हैव टू टेक द रेनकोट। किसी भी सिचुएशन में जो आएगा वही कैच ब्लॉक वो हैंडल करेगा। ओके, so after the try and catch block we have the another block that is called as finally. Finally is another block which is used to close the open resource. It is a type of part, remember that thing. Finally block is a block, if your exception arises it is execute, if your exception not arises then also it is execute. अगर आपका एक्सेप्शन आता है तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अगर आपका एक्सेप्शन नहीं आता है तभी भी ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो दोनों टाइम में ये एग्जीक्यूट होगा फाइनल ब्लॉक। देन इट इज यूज टू क्लोजिंग द ओपन रिसोर्स। ओपन रिसोर्स का मतलब क्या है ना, जो प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, सपोज एक होता है फाइल, एक क्लास होगा, आगे पढ़ेंगे, फाइल एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल। ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, अगर यही प्रोग्राम में मुझे और एक बार इसको यूज करना पड़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो ओपन रिसोर्स होता है इसको बोलते हैं रिसोर्स। ये रिसोर्स को क्लोज करने के लिए मैं यूज करता हूं फाइनल ब्लॉक, एफ डॉट क्लोज मेथड। एफ डॉट क्लोज मेथड यूज किया जाता है। तो इट इज ए पार्ट, इफ योर एक्सेप्शन अराइजेस इट इज एग्जीक्यूट, इफ योर एक्सेप्शन नॉट अराइजेस देन इट इज एग्जीक्यूट। जैसे कि क्या हो गया, नाउ यू आर, when you are going to your college, in that day there is heavy rainfall is present, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। अगर नॉर्मल कंडीशन होता है आप आराम से पहुंच सकते हो, लेकिन बारिश है, हो रहा है, देन यू हैव द रेनकोट। आपके पास रेनकोट भी है, अम्ब्रेला भी है, लेकिन द स्पीड ऑफ मूविंग टू योर कॉलेज, जितना स्पीड में आप जाते हो वो थोड़ा कम हो जाएगा, और रास्ते में भी कहीं जगह पर पानी हो जाएगा, आप जा नहीं पाओगे, तो यू आर मे बी लेट फॉर 10 to 20 मिनट। तो आपको वहीं पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो, मतलब दैट इज एक्सेप्शन, मुझे आज नहीं जाना है, देन आई विल इन्फॉर्म दैट टुडे आई एम नॉट गोइंग। अगर आपका लेट भी होता है आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, मतलब अगर आपका एक्सेप्शन होता है तभी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ एक्सेप्शन इज नॉट अराइजेस then also it is execute. Then why it is used? It is used to closing the open resource. तो सबको पता नहीं होता है, बोलते हैं फाइनल ब्लॉक ऐसा ही डिफाइन कर देंगे, बट बेसिकली इट इज यूज टू क्लोजिंग द प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट। जो प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्लोज डाउन करने के लिए, टू अवेलेबल टू द नेक्स्ट यूज, वी हैव टू यूज दिस पार्ट, क्लोज मेथड। Okay, so this is the work of your finally block. Try, catch and finally is the basic part of your program. Okay, so it is a closes the open resource
execute with or without the try block, it always execute after the catch block. Catch block के बाद execute होगा. It may generate an exception. वो exception में generate होगा. मतलब आपका जो exception जो है, जो फाइनली ब्लॉक में एक्सेप्शन में भी जनरेट हो सकता है. Okay, so this is the work of try catch finally. So in the next class I will go for the try with resource statement and other parts of this exception handling. Okay, and the practical part of this exception handling. Okay, so bye. Okay, sir. Thank you, sir.